Hello student, I hope you people have watched the video part 1 and you have done the questions which we have given as the homework. So now we are going to start the another topic from the same chapter, that is factor influence the climate of place. किसी जगह के climate को influence कौन कौन सी चीजें करती हैं? तो यहाँ पे in the book there are 5 factors which influence the climate of a place. So we are going to discuss one by one. We have already done data, so we are just here for the revision work. I will not explain you the terms in very elaborated manner, but मैं कोशिश करूँगी कि short में आपको एक बार बता दूँ, so that you can attempt the questions which are given in your booklet. So the first factor is distance from the equator. That is the first factor, which is distance from the equator. This is equator marked at 0 degree. This is imaginary line, as you all know. So the places which lies near the equator. If you remember, in the previous video we have done the heat zones. So I explained you that the area near the equator receives the maximum heat and light from the sun. So obviously the area which is receiving the maximum heat and the light of sun, this area is more hotter than this area. So आपका area which is nearby the equator, this is hot. As you move towards the pole, this is north pole, this is south pole. As you move towards the pole, either it is north pole or it is the south pole. आप किसी भी side जाओ, north pole में जाओ या south pole में, the temperature will automatically decrease. Temperature decrease होगा, घटता जाएगा. ऊपर आपको बताया था freezing zone की side, the temperature decreases. So first factor is this: the places near the equator is hot. And the places as we move far away from the equator, आपका temperature decrease होता जाता है. तो first factor आपका हो गया distance from the equator. Now the next factor is height above the sea level. Height above the sea level means the height above the sea level is called altitude. Altitude मतलब आपका जमीन से कितनी height है, कितनी ऊंचाई है. So अगर आप देख रहे हो, if we will take an example, this is a mountain area और एक land, ये आपका land है, ये आपका height है. This is the portion which is जो आपकी height पे है. So जैसे जैसे आपको पता होना चाहिए, like as you move upside, जैसे जैसे आप ऐसे जा रहे हो, upside जा रहे हो, what will happen? The temperature automatically will get decrease. जितना ऊपर जाते जाओगे temperature घटता जाएगा, जैसे आप नीचे आते जाओगे temperature आपका increase होता जाएगा. You can take an example of किसी भी mountain area का आप ले लो, मनाली चले जाओ, शिमला, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख. Wherever you will go, you will observe as we move upside, temperature will decrease. As we come downstairs, जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे, the plains की side, the temperature will increase. तो ये आपका next factor होता है. The first factor is distance from the equator, then height above the sea level, then the third factor is distance from the sea. As you all know that the water bodies जो आपकी बेटा होती हैं, वो बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती हैं, उतनी जल्दी ठंडी आराम से हो जाएगी, गर्म भी बहुत जल्दी नहीं होंगी. तो जितने भी एरिया विच आर कोस्टल एरियाज, उनमें क्या होता है, टेम्परेचर मॉडरेट होता है, ना बहुत ज्यादा गर्म होगा ना बहुत ज्यादा ठंडा होगा. तो they experience moderate climate, neither it is very hot neither it is very cold. You can take an example, इंडिया का southern part है, this is the peninsula part, वहां पे आपके water bodies है, कैसा रहता है, टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, neither too hot neither too cold. The area when you are there, Mumbai में if you are there, then how you will feel moderate. इतनी ठंडी नहीं है जैसे हम लोगों को हम नॉर्थ में हम फील करते हैं. हाँ, बट आप अगर मुंबई में हो, आपको भी सेम एक्सपीरियंस होगा. As you will come, थोड़ा सा दूर जाओ या आप हायर एल्टीट्यूड की साइड जाओ या आप प्लेन्स में आते जाओगे, तो टेम्परेचर आपको ऑटोमेटिकली फील होगा, यहाँ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इधर प्लेन्स में थोड़ा कम बढ़ेगा, बट वैसा टेम्परेचर नहीं होगा जैसा आप फील कर रहे होंगे कोस्टल एरियाज में. सही. Then the next part is humidity. And what is humidity? The amount of water vapor present in air. So, अब ये humidity क्या करती है, climate को कैसे influence करती है? Humidity depend करता है किसी जगह के rainfall के लिए. It is the main factor for the rainfall. जितनी humidity उतनी rainfall receive करेगा वो area. तो अगर किसी area में humidity का amount ज़्यादा है, तो वो क्या कर रहा है, एरिया इट अट्रैक्टेड द रेनफॉल, वो अट्रैक्ट कर रहा है रेनफॉल को. रेनफॉल होगी तो ऑटोमेटिकली इट विल डिक्रीज द टेम्परेचर. क्या करेगा, if the rainfall is there, it will automatically
So this is the next factor. Then the last factor is distant direction of wind. From where the wind is coming? Wind आने के बहुत सारे तरीके, like हो सकता है wind आपके किसी coastal area से आ रही हो, maybe the wind is coming from the mountains, maybe the wind is coming from the desert part. So if the wind is coming from the hot area, automatically that wind will increase the temperature. वो हवा गर्म है तो वो जब आपके एरिया में आएगी तो वो क्या करेगी, वहां के क्लाइमेट को गर्म करने का काम करेगी. अगर if the wind is coming from the cold area तो वो क्या करेगी, ऑटोमेटिकली दैट विल डिक्रीज द टेम्परेचर. इन द क्लास आल्सो व्हेन आई एक्सप्लेन दिस चैप्टर आई टोल्ड यू दैट यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ योर होम ओनली. अपने घर में देखो, आप घर के अंदर बैठे हो, व्हाट इज गोइंग, आप किचन में हो, किचन वाली रूम का थोड़ी देर डोर क्लोज करो, ऑटोमेटिकली आप थोड़ी देर बाद खोलो, आप दूर भी खड़े हो गए, देन यू विल फील कि वहां से कुछ गरम गरम आ रहा है. क्यों? क्योंकि किचन में गरम है, बिकॉज द विंड इज कमिंग फ्रॉम द किचन एंड वो गरम है. एसी वाले रूम का डोर थोड़ी देर बाद खोल के बंद करके खोलोगे, देन यू विल रियलाइज कि वहां से कोल्ड एयर आ रही. क्यों आ रही है कूल एयर? क्योंकि दैट विंड इज कमिंग फ्रॉम द कोल्ड रूम. सो ये फैक्टर, तो विंड इज कमिंग फ्रॉम, इफ द विंड इज कमिंग फ्रॉम द कोल्ड एरिया दैट विल ऑटोमेटिकली डिक्रीज द टेम्परेचर, एंड इफ द विंड इज कमिंग फ्रॉम द हॉट एरिया दैट विल इंक्रीज द टेम्परेचर. So they are the factors which influence the climate of place. Try to read it from once from the book also. And based on this topic, factor influence the climate of place, and the topic which we covered in the video 1, there are few questions which you people have to do as homework. Now the question number 1, here are question number 1 where you have from A to H part, and you have to complete it by your own. Try to read it, solve it by yourself. Right? Then question number 3, here you have to read the situations and you have to write the appropriate factor. कौन सा factor लगेगा climate का? Fine? तो आप उसको you will read it, you will try to find out yourself कि पांचों factors में से कौन सा factor है जो यहाँ पे लग रहा है. तो आप easily you can do it because you have already done in your NH also. Now the question number 6, circle the correct word. You have to circle the correct word which is the correct one. Then the question number 8, you have to rewrite the sentences again because something is wrong in it. Like I'll just read it one for you people. The water vapor present in air is called temperature. So here the temperature is wrong. Like the water vapor present in air is called humidity. So what you will do, you will underline the temperature word and you will correct and you will rewrite the whole sentence. The water vapor present in air is called humidity. In the same way, you will complete there are 5 parts in this question. You will complete this also and try to get it completed by your own. Watch the video 1 and 2 very nicely and read the chapter twice or thrice. Do the practice of diagram which I told you about the heat zone. Fine. And later on, if you find any difficulty in any topic, please note down in your rough copy or maybe in your book, and then we will discuss in the class. Thank you so much.